So, Babar, what do you think? I mean, आपके क्या राय है? सलीम ने जैसे कहा है कि I mean about this project, there is a lot of demand, lot of expectations, and he sees कि जी market के अंदर इसकी बहुत डिमांड है. आपकी क्या राय है इसके अंदर? First of all, this project is very good. Secondly, Sports City अभी एक ऐसा area जिसकी prices, as you mentioned, you know, it's affordable for the middleman. Like it's not highly priced currently, and आपकी investment जो है, it's secure in that because there is chance of further growth in this area. Okay. Plus, it's upcoming, you know, and all the points that he mentioned, that you know the cricket stadium is there. And In short, I think आप ये कहना चाह रहे हैं कि within this price, it is a high-end living. yes. Which probably you get somewhere in Marina or Jumeirah Lake Tower, but in this price you can live the same standard in Sports City. Am I right, Salim? जी हाँ, because ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपके पास I think all those facilities which you find it in downtown, in Dubai Marina or any of the high-end locations. बिल्कुल क्वालिटी वाइज भी आपको जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया क्वालिटी वाइज भी इट्स मैचिंग एनी अदर गुड डेवलपर Right. तो we'll get a chance to go to the building with you also. आप उसको एक मॉकअप अपार्टमेंट आपने तो खैर देखा. मैंने देखा है. I would like to show it to my viewers inshallah in coming days. तो हम एक मरतबा फिर जैसे आप get a better idea कि what quality we are talking about, what sort of finish we are talking about, what sort of amenities, equipment, facilities we are talking about. Right. अच्छा, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स सिटी के लिए. जब से जबल अली एयरपोर्ट एक्टिव हुआ है और जब से वहाँ पर पैसेंजर्स फ्लाइट्स ने लैंड करना शुरू किया है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है. आई बिलीव के आई थिंक इन द कमिंग डेज द सिटी विल बी मूव टुवर्ड्स दैट साइड. अभी 3 दिन पहले मैं अखबार में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि जी शारजा से लोग अब दुबई मूव हो रहे हैं. राइट. है ना. रीज़न उसकी यही है देयर वर्क मेनी पीपल लिविंग इन शारजा वर्किंग इन जबल अली. राइट. तो उनके लिए अफोर्डेबल अकोमोडेशन भी तो चाहिए. बिल्कुल सही. अकोमोडेशन इन एरियाज के अंदर ही आ सकती है. नहीं, लेकिन अफोर्डेबल इन द सेंस कि जी यू कैन नॉट मैच the rental value of Sharjah with Dubai. Of course not, but you can save that time and time is money. I agree with you. आपने जो है वो सुबह 6 बजे घर से निकलना है और आपने पहुंचना है रात को 9:30-10 बजे घर. उससे बेहतर है you leave your house at 8:30 also and you're at work in 20 minutes. Agreed. Because ना ट्रैफिक का वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ना एक्सेस का कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है. Absolutely. Facilities are good. और लोग they want to come to a better living. I think now Sports City and all these locations within the vicinity of Sports City, they have easy most access कि आप कहीं भी जाना चाहें, including coming back to the old city of Dubai. I think from the Sheikh Mohammed bin Zayed Road, which used to be Emirates Road, it takes you anywhere and everywhere. Then parallel आपके जो है Al Khail Road है. So you know, हमने भी अभी आपके पास जब आना था तो वही था कि हमने अल खेल रोड ही ली थी because Sheikh Zayed is like you know how difficult it is to absolutely be on Sheikh Zayed at 6 absolutely yes Al Khail ही prefer किया because it's empty. It's most of the time yes, it is very fast, no signals, nothing. ये सारे advantages are there और besides traffic के या दूसरी चीज़ों के it's about people wanting to be closer to where most of the people want to be. And Dubai as a city itself, sports city तो है ही है वो तो एक, but Dubai as a city itself has too many advantages. Plus बाकी लोगों के लिए easy है वे हर चीज़ यहाँ पर आपको easily available है. Right. Plus आपने जब airport की बात की तो there's so much more to come over there. Absolutely. Yes. You have too much employment coming up there. Right. अभी एयर शो हुआ यहाँ पे. तो अगर आप उसको देख लें तो उस टाइम के ऊपर मतलब जो लोग पहले उस तरफ गए हुए भी नहीं थे ना, they started to come on that. पहले ये होता था कि जी मरीना JLT डाउनटाउन से निकले and you come towards the city air show. Absolutely. But now you're going to the other side. Yeah. The other side, which is the new side of the world. Now I think this is a very very good planning of His Highness Sheikh Mohammed. And I mean इन्होंने एक डिज़ायर क्रिएट कर दी है और वो उस जगह को एक
एक न्यू लाइफ दे दी है आप इसमें बेसिकली। देखेंगे कि जब तक वो नहीं आया था तो nobody showed interest, ना किसी को इतना आइडिया भी नहीं था कि it actually come up, क्योंकि लोग ये समझते हैं अच्छा हो रहा है आ रहा है, बट इट फाइनली केम अप। Right. और जब वो आ गया तो नाउ पीपल इट्स समथिंग दैट एवरीबडी स्टार्टेड टू एक्सेप्ट। Right. वो जब फुल एक्सेप्टेंस में आ गया तो यू विल सी द चेंज। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ये अपार्टमेंट्स जो हैं किस प्राइस रेंज में एज लाइक यू नो कि इज़ इट $500,000, 600,000, $1 million? क्योंकि ये सवाल अक्सर आते हैं कि जी क्या प्राइस रेंज होती है आपके प्रोजेक्ट्स की? हमारे पास, as I mentioned to you earlier, we have different mix of units. Yeah. We don't only have a single type of unit. Yeah. Studios, we have 1 bedroom plus study. Yeah. We have 2 bedroom plus study. We've got 2 bedroom plus study plus Yeah, bedroom. We've yeah. got different types of units. Huge variety, of course. Variety, Yeah. of course. So Yeah. we are catering to all sort of investors. Studios are starting from 540, 550,000 dirhams depending on the view. कुछ पार्क व्यू है, कुछ गोल्फ व्यू है. Then Yeah. you've got 1 bedroom starting from 840, 850,000 dirhams. So under $1 million dirhams. And then of course 2 bedrooms are a bigger size property, and उसमें जो है they're going up to around 1.2 million, 1.25 starting prices. Yeah. Of course it varies with the size. But this is the total price. What our investors will pay will be 60% of it Ji. to take the possession, Yeah. and then rest of the payments will be in 14 months, Of course. and then you require post-dated checks for And those. then if you calculate your yield on that 60%, you're much like reaching I think about 15-20% you will be recovering as it is. around between 14 to 16% of it. So actually, what they will be paying will be from the cost maybe 10 to 15% lesser than the cost, provided they are able to rent it. बिल्कुल. And we can assist them also in renting as well, right? We've got a Separate division for the rental. division for that. And plus आपको जो मैंने अभी पहले बात की कि renting wise it's in high demand. It is in high demand. There is no doubt about अगर it. इस तरह की चीज़ें ये हमारे पास इट्स सबऑर्डिनेट, अगर ये हमारे पास ना हो या हमारे पास डिमांड ना हो तो बंदे की इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता। Absolutely तो right. ऑफ कोर्स एज आई मेंशनड यू अर्लियर, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स दे आर फुली ऑक्यूपाइड। अभी हमारे Right. पास ऑलरेडी वी हैव पीपल वेटिंग जी खाली हो तो दे कम इनटू द, बिकॉज़ साइज वाइज अपार्टमेंट्स You're talking about Olympic Park, your first project. arena itself is size wise, 1800 square feet के 2 bedrooms, they are a huge apartment. Yeah, massive. And they Yes. have proper facilities to it as well. Right, right. तो उसमें एक बड़ा advantage है. बहुत thank you very much for this, and in fact we wish you good luck. Thank you. We will try to help you the most in your this project and the upcoming projects. हमारा रिलेशन आपके साथ शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, नहीं and it has to go on. And in fact आपका रिलेशन हमारे viewers के साथ has to be very strong, and we can assure our viewers that, as we mentioned in our previous episodes, that we will not be bringing you any project which has any doubts in it. We are going to bring you all the projects where you are sure that you are going to get the possession. Nothing of the past will be repeated here. We want to make sure that कि आपकी investment secure हो and you get the best returns out of it. We take leave from now, and may I say thank you, Salim bhai, Babar bhai, and looking forward to meet you again once more in this. And आपके कोई भी queries हो, कोई भी सवाल हो, you can call us anytime, and we will be very happy to assist you.